Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I am back again with another very interesting episode of Sayyidat Global Talk Show. आज मेरी दो बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, डॉक्टर शाजिया मकसूद और मिस अज़रा यूसुफ। हम चाहेंगे कि वैसे तो दोनों को माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी जानती ही है, मगर फिर भी मैं चाहूँगी हमारे न्यू कमर्स के लिए, न्यू व्यूअर्स के लिए कि आप दोनों अपना थोड़ा-सा तारुफ भी करा दीजिए। विल स्टार्ट विद डॉक्टर शाज़िया विद यू। थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा। Thank you very much, Fatima. Assalamu alaikum, everybody. And thank you very much for making me a part of this very important talk on breast cancer awareness in keeping with the month of October, which is a breast cancer awareness month. And I welcome Miss Azra Yousuf as well. Thank you. My name is Dr. Shazia Maqsood, and I'm a consultant obstetrician and gynecologist. I've been practicing in Riyadh and Dr. Sulaiman Al Habib for the last 13 years as a senior consultant gynecologist. I'm also the training program director for the Saudi ObeGyne residency, and my special interest is in women health, and especially in keeping with the month of October, when Fatima invited me to join this forum. I was really happy. हमने पिछले साल भी ये इवेंट किया था, उससे पिछले साल भी ये इवेंट किया था, और फातिमा की वजह से हम सबको ये मौका मिलता है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें और कैजुअली इनफॉर्मली बैठ के इम्पॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर, सीरियस इश्यूज के ऊपर अवेयरनेस रेज कर सकें. सो थैंक यू वेरी मच फातिमा. Jazakallah khair to you and welcome aboard. जी अज़रा. Assalamu alaikum. A good evening to all my friends out here. My name is Azra Yousuf. I come from Bangalore, India, and I'm a proud mother of 4 children. My eldest son is 26 and my youngest is 12. Alhamdulillah. I've been living in Saudi since 26 years. Alhamdulillah. And so currently living in Riyadh now. And I'm the founder of Blossoms International School, Riyadh. It's a licensed school for kindergarten up till grade 4. Alhamdulillah. I started the school 19 years back at my house, very same place. I worked really hard because I really wanted to do something for the children, because in those days they weren't very good kindergartens or play schools, with the right environment. And the children needed this, they were at home, hardly any friends and neighborhoods compared to what we have in India and Pakistan. So I really wanted to give them quality education, a home away from home, concentrating a lot on the language development, English, and giving them so much of love that they work towards success and knowledge with a lot of confidence. So it was a second home. I worked a lot for the school, and alhamdulillah, it's a successful school now. And about I come from a freedom fighters family. My great grandfather Haji Usman Seth, he was the president of the Khilafat movement of India during the British rule. So he was a very rich businessman, and he donated all his property for the cause of freedom fight against the British. Alhamdulillah. And my father's into hotels and resorts. He's 75, but he's still driving, he's still working. So I'm something, a reflection of my dad. I'm just like him. So I was Mashallah. just, Alhamdulillah, and I'm a proud cancer survivor. I was diagnosed with breast cancer in 2018, 5 years now, Alhamdulillah. And since then, after I finished my treatment, I've come back to Riyadh, and I am into talk shows and interviews, and am invited to various institutions to create awareness about cancer. So I do not shy. I want to talk. I want to inspire women. That's why I'm here today. Thanks Alhamdulillah. to Mrs. Ibrahim, Ibrahim, and thanks to Dr. Shazia for getting me here today.
Alhamdulillah, pleasure is all mine, dears, and Yes. welcome aboard. Thank you. Uh, जज़ाकल्लाह खैर. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बात करने वाले हैं. बहुत टची टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आई एम ग्लैड कि एक वक्त था जब लोग ऐसे मौजू पे बात करने से कतराते थे और शर्माते थे, बात नहीं करते थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग इन एन एरा के लोगों के अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी अवेयरनेस आ चुकी है. अब वो बात सुनना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं. सो आई एम ग्लैड कि हमारे साथ आज डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह से और एक सर्वाइवर भी हैं. तो इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि आज जो हमारा ये टॉक शो होगा वो एक पॉजिटिव अवेयरनेस इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी में ज़रूर लेकर आ जाएगा. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू डॉक्टर शाजिया. मैं चाहूँगी सबसे पहले आप ये बताइए कि एक जो मदर्स हैं या यंग लेडीज़ हैं, उनको सबसे पहले आप बताएं, सेल्फ चेक के बारे में बताएं कि किस वक्त एक लड़की को क्या प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उसको कैसे पता चलेगा कि यार ये मुझे वैसी कोई पेन हो रही है और शुड आई कंसल्ट द डॉक्टर. ये बड़ा अहम सवाल किया है आपने फातिमा, कि सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी अपनी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. अपनी अवेयरनेस से मुराद ये है कि हम अपने आप को चेक करें, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है. ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़ाहिर अज़रा भी मुझे सुन रही हैं, तो ऑब्वियसली वो इसकी तारीफ करेंगी. ब्रेस्ट कैंसर होने के जो हैं वो कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, और किस तरह से आप उसको उससे वक्त से पहले तशखीस हो जाए, ताकि वक्त पे डायग्नोसिस हो जाए, ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो जाए. तो उसमें उस सिलसिले में सबसे पहला जो स्टेप है वो तो यही है कि अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कैसे किया जाए. एक तो ये बात है, और फिर उस सेल्फ एग्जामिनेशन में जो है हम क्या चीज़ें देखें कि जो हमें अवेयर कर दें. आपने कहा कि बच्चियां अपने आप को किस तरह से देख सकती हैं, किस तरह से चेकअप कर सकती हैं. तो यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी कोई एज सच एज नहीं है, लेकिन एक ज़्यादा एज ग्रुप जो है वो 40 के बाद, 50 के बाद है. तो इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये रेकमेंड करती है कि 40 के बाद हर साल एक एनुअल मैमोग्राम होना ज़रूरी है, या ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवा लें जिनके ब्रेस्ट थोड़े डेंस हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानियों में और इंडियन ख़वातीन में ख़ासतौर पे ब्रेस्ट थोड़े ज़्यादा डेंस होते हैं, तो मैमोग्राम थोड़ा तकलीफदेह हो जाता है. तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छी मोडालिटी है. तो अगर किसी को ये शक है कि कोई ब्रेस्ट में कोई गिल्टी है, या निपल के ऊपर कोई ऐसा ज़ख़म है, या कोई ऐसा इखराज है जो मुस्तकिल हो रहा है जो सही नहीं हो रहा, या कोई ऐसा शेप है ब्रेस्ट का जो कि पहले नहीं था अब हो गया, या दोनों ब्रेस्ट के साइज़ों में कोई डिस्क्रिपेंसी है ऐसी जो कि पहले नहीं थी, या आपको कोई इस तरह से बाज़ों का कुछ ख़वातीन हमारे पास आती हैं, कहती हैं मुझे वहम सा हो गया, तो मैं यही कहती हूँ कि बेटर सेफ देन सॉरी. तो उसको स्क्रीन करा लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है. तो उसी सिलसिले में बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं ब्रेस्ट कैंसर की, और 1 in 8 अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें every 2 minute a woman will be diagnosed with breast cancer, और अनफॉर्चुनेटली every 13 minute a woman dies from breast cancer. और इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ओबेसिटी है, यानी जो हमारे ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के पकवान हैं जिसमें चावल के ऊपर ज़्यादा ज़ोर है, मीठे के ऊपर ज़्यादा ज़ोर है, कार्ब्स के ऊपर ज़्यादा ज़ोर है, तो वो एक तो ओबेसिटी उसका रिस्क फैक्टर है. ओबेसिटी का मतलब है कि एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में ज़्यादा बनेगा, और एस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा तो यू आर मोर लाइकली टू हैव अ रिस्क ऑफ कैंसर, नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर बट अदर कैंसर्स एंड डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ एज वेल. उसके अलावा जो है जेनेटिक्स, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो हर्स आपकी जो जीन्स हैं, रिसेप्टर जीन्स हैं, तो बाज़ फैमिलीज़ में अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर ज़्यादा प्रिवेल करता है. तो इस वजह से हम जब कोई हमारे पास आता है स्क्रीनिंग के लिए, तो जब हम उसकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं तो हम ये भी पूछते हैं कि फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में मदर, खालाएँ, फुप्पो, उनमें से किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी एज क्या थी और उसका प्रोग्नोसिस क्या हुआ, किस एज में वो हुआ कैंसर, तो वो चीज़ें. उसके अलावा आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपके खाने का तरीका हो गया, उसके अलावा जो है स्मोकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कट डाउन करना ज़रूरी है. और जो आपने सवाल किया कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसको, तो ज़ाहिर है कि एनुअल मैमोग्राम करके, ईट हेल्दी करके, एक्सरसाइज करके अपना वज़न जो है वो सही रखें. 1 in 8 वेमेन जो है वो कैंसर से डायग्नोज होंगी, और अभी जो हमारे ग्रुप में जो हमें सुन रही हैं इसमें से 1 in 8 कैंसर में डायग्नोज होंगी अनफॉर्चुनेटली. और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो या तो सर्जरी है,
कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी है या हार्मोन थेरेपी है, और या इनका कॉम्बिनेशन है। तो आज हम बात करें इसी सिलसिले में कि जो कॉजेज़ हैं, और उसके बाद मैं चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा हम टच करें ये सारी ट्रीटमेंट, इनके साइड इफ़ेक्ट्स और क्या वो होते हैं। बीच में हम क्वेश्चंस भी लेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप मुझे रोक भी सकते हैं, बीच में टोक भी सकते हैं, कोई भी सवाल आए तो आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। जिस तरह हमने अर्ज़ किया कि 55 ईयर या उससे ज़्यादा की एज, लेकिन अगेन इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, इससे कम उम्री में भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। ओबेसिटी, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री। किस तरह से आप चेक करें कि हार्ड कोई पेनलेस लंप हो। अच्छा, अक्सर मेरे पास ख़वातीन आती हैं कि हमें पेनफुल लंप हुआ और हम डर गए। मैं उनसे ये कहती हूँ कि यूजुअली जो अच्छी बात है पेनफुल लंप में, तो यूजुअली कैंसर का लंप पेनफुल नहीं होता। तो पेनफुल है तो अगर कोई वो मिसाल के तौर पे कोई इन्फेक्शन है या कोई डक्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर को मैस्टाइटिस है, तो वो एक अलग है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको चेक कराना ज़रूर चाहिए। कोई ब्लडी या निपल से डिस्चार्ज हो रहा है जो कि जा ही नहीं रहा। अच्छा, निपल अंदर की तरफ धस गए हैं। अच्छा, कुछ लड़कियों के, कुछ खवातीन के निपल कुदरती तौर पे अंदर धसे हुए होते हैं, तो ये उनकी बात नहीं हो रही। उनके जिनके पहले नॉर्मल थे लेकिन अचानक अंदर की तरफ धस गए हैं। खुद भी एग्जामिन करें, अपनी अम्मियों को भी कहें एग्जामिन करें, अपनी घर की जो 50 प्लस एज की जो आंटीज हैं उनको भी कहें कि एग्जामिन करें, उनको हेल्प कर दें। अच्छा, उसके अलावा निपल के ऊपर कोई ख़ारिश हो रही हो जो पहले नहीं थी, कोई स्केलिंग हो रही हो, रेडनेस और स्वेलिंग हो रही हो कॉलर बोन में, बगल के अंदर, तो या पेन हो, या स्किन की डिम्पलिंग जो है, जैसे आप ऑरेंज खाते हैं ना, तो ऑरेंज में छोटे 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 डिम्पल पड़े हुए होते हैं, वो स्किन की डिम्पलिंग खुदा ना खास्ता हो तो वो एडवांस स्टेज कैंसर होता है। अनफॉर्चुनेटली इतना तो छोड़ना ही नहीं चाहिए आजकल के ज़माने में। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा तरीका लगता है ब्रेस्ट कैंसर को एक्सप्लेन करने का कि नो योर लेमन्स। इसमें डिफरेंट शेप्स और साइजेस के लेमन्स इस तस्वीर में दिखाए हुए हैं, और उसमें फिर ये दिखाया है कि अगर हार्डनिंग है कोई अलग से, जैसे ये आप इसको ब्रेस्ट समझ लें, अगर हार्डनिंग है तो उसको चेक करा लें। कहीं से इंडेंटेशन है कि वो अंदर की तरफ धंस गया है, इसको ज़रूर चेक करा लें। कहीं से स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है या कोई ऐसे मुश्किल आई हुई है तो उसको चेक करा लें। कोई रेडनेस हुई हुई है उसको चेक करा लें, कोई डिस्चार्ज हुआ हुआ है उसको चेक करा लें, कोई डिम्पल पड़ गया उसको चेक करा लें। इसी तरह कोई बम्प बना हुआ है उसको चेक करा लें। इसी तरह कोई वेन्स जो पहले कॉमन नहीं थी, उसमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसमें वेन्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं, उसको चेक करा लें। इसी तरह निपल के इर्द गिर्द कोई सोरनेस है या कोई एसिमेट्री हो गई है, अलग से गिल्टी नज़र आ रही है, उसको चेक करा लें। या ये जो टेक्सचर ऑफ द स्किन है ब्रेस्ट का, वो ऑरेंज पील स्किन की तरह हो गया है, या कोई इनविजिबल लंप है कि आपने हाथ फेरा, साबुन लगाया हुआ था हाथों पे, नहाने के दौरान आपका हाथ गया तो आपको लगा कि लंप है वहां पे। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस होती हैं, तो जाहिर है जैसे कि 0 से 4 तक अगर स्टेज है तो जाहिर है बेहतर स्टेज तो यही होगी कि 0 और 1 पे डायग्नोज होकर उसका दिया पांचा कर तला कमा कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जो कि स्टेज 2, 3 या 4 पे, खासतौर पे हमारी पाकिस्तानी और इंडियन खवातीन में, क्योंकि हम अपने आप को इग्नोर ज़्यादा करते हैं तो उसमें वो होता है। तो 0 के ऊपर तो ज़ाहिर है कोई ट्यूमर साइज वो छोटा हो, बिल्कुल लिमिटेड हो, और उसके अंदर कोई स्प्रेड ना हो, एज अपोज टू 4 जो है उसमें ट्यूमर स्प्रेड हो चुका होता है और वो किसी भी साइज का होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस इन स्टेजिंग के साथ जो है, ज़्यादा जब ऑपरेट करते हैं या कोई बायोप्सी लेते हैं या ऑपरेट करके कैंसर निकालते हैं तो उस वक्त उसकी स्टेजिंग होती है। तो ये 5 ईयर सर्वाइवल, यानी अगर मुझे आज तो 2023 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, जैसे अजरा ने बोला कि उनको 2019 में कैंसर डायग्नोज हुआ, तो 2021, 22, 23, आज 4 साल बाद ये आपसे बात कर रही हैं, तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट स्टेज 4 का इस तरह होगा कि 10 में से 2 खवातीन ही जिंदा बचेंगी अनफॉर्चुनेटली। एंड आई एम श्योर मुझ समेत हमारी हमारी जानने वालों में, सराउंडिंग में, कम्युनिटी में आप बहुत सी ऐसी खवातीन को जानते होंगे जो अल्लाह के करम से अब जिंदा नहीं हैं, छोटे बच्चे छोड़ के गई हैं पीछे, उनकी फैमिली सफ़र करती है, आपको मालूम है, आप इस बात के इल्म में हैं। और बहुत सी ऐसी खुशनसीब खवातीन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अज़रा अल्लाह ताला आपको महफूज रखे हमेशा हमेशा, कि वो जो हैं अपनी बेटर स्टोरीज़ और हैप्पी स्टोरीज़ और गुड स्टोरीज़ सुनाने के लिए भी जो है वो तैयार होती हैं। तो ये एक ऐसा इशू है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जिसके अंदर हमें हमें इस बात की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जितना अर्ली ये डायग्नोज होगा उतना इजीली ये ट्रीट होगा।
तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जैसे कि हमने बोला, और साइंटिफिक तरीके से ग्रेड 3 ऑब्वियसली वो है जब वो मामला जो है वो ब्रेस्ट के ग्लैंड से बाहर निकल चुका होता है, लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर चुका होता है। तो जो आपको जानने की ज़रूरत है उसमें यह है कि या तो ज़्यादातर एक ब्रेस्ट अफेक्ट होता है, और बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली 2 ब्रेस्ट भी अफेक्ट हो सकते हैं। उसमें आपके जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं उसमें यह है कि डॉक्टर आपको या तो ये कहेगा कि हम दोनों ब्रेस्ट निकाल दें, या हम वो लंप निकाल दें, या हम मेस्टेक्टमी कर दें। ये सर्जरी होती है उसकी। उसके बाद जो है वो जो सर्जरी के बाद जो पीछे स्किन बचती है, आई एम श्योर कि अज़रा विल टेल अस हर स्टोरी। आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग हर स्टोरी कि उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए बाज़ औक़ात बैक की स्किन से या बटक की स्किन से फ्लैप लिया जाता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। बाज़ औक़ात उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। बाज़ औक़ात जो बगल की गिल्टियाँ हैं वो भी निकालनी पड़ती हैं इस कैंसर में, अगर वो उसकी स्टेजिंग में वो लिम्फ नोड्स आए हैं, उनकी हीलिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोस्थेटिक्स लगा लीजिए, ऐसी ब्रा पहन लें जो कि प्रोस्थेटिक ब्रा हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब ये वो ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा कि अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मंथ है, लेकिन हो सकता है कि मेजॉरिटी आप लोग जो है वो पहली दफ़ा ये सारी बातें सुन रहे हैं। सर्जरी के बाद आती है कीमोथेरेपी। आपको ये भी पता होगा कि जब हम फैमिली में हमारे किसी को कैंसर होता है तो हम सबसे बेहतरीन कैंसर थेरेपिस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें लेडी ऑन्कोलॉजिस्ट मिल जाए, कोई हमें लेडी सर्जन मिल जाए। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि आपकी कम्युनिटी में, आपकी शहर के अंदर जो भी बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, प्लीज़ पहली फुर्सत में उसको दिखा लें। ये ना करें कि लेडी, मैंने अक्सर ये फैमिलीज भी देखी हैं कि जो कि इंसिस्ट करती हैं कि लेडी ऑन्कोलॉजिस्ट और लेडी सर्जन हो, उस चक्कर में उनको देर भी हो जाती है। तो कीमोथेरेपी जब आती है तो अगेन 2-3 तरह की कीमोथेरेपी है। ये कैंसर सेल्स को वहीं पे मार देती है। जी, आप कुछ बोल रही हैं फातिमा? जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी, मैं जी। चाह रही हूँ कि मैं दोनों से बैक टू बैक सवालात करती जाऊँ, जितना अभी तक आपने बताया है जी, उसी के बिल्कुल। हवाले से मैं इनसे भी यानी सवाल करना चाहूँगी जी, कि बिल्कुल। अज़रा, मुझे ये बताओ कि जैसे अभी हम उसकी बात कर रहे थे कि इसकी कोई एज नहीं है कि जब आपको पता चले कि भाई आपको ये कैंसर की तरफ आप जा रही हैं। तो आपको किस वक़्त पता चला था कि यार कि फर्स्ट टाइम आप वो एक्सपीरियंस, अभी हमारे जो व्यूअर्स माशाल्लाह से काफ़ी सारे आ गए हैं, तो उनको आप बताएँ, अपना वो फीलिंग के बारे में बताएँ कि आपको किस तरीके से पता चला कि यार मैं इस तरफ, और आपको यानी फीलिंग हो गई थी कि यार मुझे कैंसर की तरफ मैं जा रही हूँ, या आपने उसको लाइट लिया था और जो है वो किस तरह से इसको टैकल किया था? Firstly, my mother, aged 56, उनका इंतकाल हुआ था कैंसर से. She had a different cancer, anaplastic carcinoma, stage 4. And since then, the doctors have been telling me कि साल में एक बार मैमोग्राम करा लो. So 15 साल हो गए मम्मी के इंतकाल को, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड पहला एक साल मैंने मैमोग्राम किया था. So it was all clear. Next year से I became busy. And I was like, no, I'll do it next year, you know. तो फिर one time I was in Bangalore for my vacation. As usual, we were quite busy with the vacation and all that. And when I was sleeping, I could feel, कि you know, when you're sleeping, करवट में, तो I could feel कि मेरे left breast में there is a hard lump. It was a hard lump. So I kept quiet because I was very scared, to be frank. I'm scared of injections. So I was scared and I didn't tell anyone. And then later, after 2 years, I told my husband about it. कि there is a lump, and I think it had grown a little big or something. लेकिन था ये, so I kept on forgetting about it. My life has been so busy, you know, taking care of my children, traveling, and then my school and my work and all that. So I was negligent, but I did not have any symptoms. I didn't have any kind of fever. I didn't have any kind of weakness. I didn't put on any weight. ना कोई स्किन रैश था मुझे, ना कोई डिसफिगरमेंट था ब्रेस्ट का. I didn't have any kind of signs, or you know, I was totally confident ये कुछ नहीं है.
बट 2018 में छुट्टी गई थी बैंगलोर एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड के इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ज़रूर आई विल गेट माई टेस्ट डन. आई हैड टू कम बैक एंड वापस आने के बाद आई हैड दिस इंट्यूशन कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टार्टेड रीडिंग कुरान. वो तो होता है हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आने के बाद आई फेल्ट दैट बहुत ही ज़्यादा आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स रीडिंग कुरान. और फिर मेरे दिमाग में ऐसा इंट्यूशन आया, ऐसी बात आई कि आई शुड सी अ गायनेकोलॉजिस्ट. I just woke up and I told my husband I have to go see a gynecologist today. So I went to Mishri Hospital. There was a Indian gynecologist there. I just went randomly and she did a breast examination and she told me that there isn't one lump, लेकिन दो lumps हैं. So I suggest you go for a mammogram immediately. So I came out of the hospital and मैंने अपने husband से कहा कि book my ticket to Bangalore. I want to fly tomorrow. And मुझे समझ आ गई बात. तो I flew to Bangalore. I got my mammogram done. And उसके बाद biopsy भी किए ये लोग. And the result came out positive. Stage 2 breast cancer. Stage 2B breast cancer. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. अब यहाँ से मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू करें ताकि हम साथ-साथ दोनों को लेके चलते हैं. जी बस मुझे थोड़ा सा आप एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मेरे हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी आ गई है. अब देख रही हैं मैं कोट पहने हुए बैठी हूँ, मैं बीच में गई हूँ, चेंज करके आई हूँ. बिल्कुल. I can मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ये पता करने की ज़रूरत है, जैसे कि अभी अज़रा ने कहा कि हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, वी ब्रश इट अंडर द कार्पेट. मेरी अपनी बहन की यही स्टोरी है. शी इज़ अ फिजिशियन, शी इज़ वर्किंग इन LA and she came for her first umrah to me about 7 years ago and she said Shazia baji मुझे लंप है, आप चेक कर लेंगी मुझे. और मक्का में मैंने उन्हें चेक किया और एक टेबल स्पून के बराबर लंप था. आई एम लुकिंग एट हर. मैंने कहा ये कब से है? कहती जब से सारा हुई है, जब से. और सारा उस वक्त 6 साल की थी, तो उनको 3B हुआ था. और उसके बाद शुक्र है कि वो वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेस्ट केयर क्लिनिक में, जहाँ पे डॉक्टर क्रिस्टी फंक हैं, लोमा लिंडा हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनकी सर्जरी हुई और उनको हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी अवेलेबल थी, जो उनकी 80 थेरेपीज हुई हैं वहाँ पे. स्किन फ्लैप उनका इन्फेक्टेड हो गया था, मतलब बहुत सीरियस किस्म की. उनको 12 रेडियोथेरेपी और तकरीबन 18 कीमोथेरेपी हुई हैं. अलाइव हैं माशाल्लाह, अपना क्लिनिक चला रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बट अल्लाह ना करे कि किसी भी फैमिली के ऊपर ये वक्त आए. और दोनों आपकी भी स्टोरी अज़रा में सुन के मुझे वही अपनी बहन की स्टोरी याद आ रही है कि वी इग्नोर इट और हम कहते हैं हाँ अभी हो जाएगा, हाँ अभी हो जाएगा, हाँ अभी हो जाएगा. और तो इसलिए ये जो 1 in 8 women है ना, इसमें से ये हम 1 ना हो, ये हमारी कोशिश है. और इसका तरीक़ाकार यही है कि आप अपने डॉक्टर को विज़िट कर लें, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवा लें, सालाना कराएं. और ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसके लिए तो बेतहाशा ज़रूरी है कि आप एनुअल कराएं और फैमिली में जितनी आपकी बहनें और कज़न्स हैं उनका कराएं. और रिस्क फैक्टर इसके वही हैं कि 2 out of 3 लेडीज़ जो हैं उनको इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर होगा, या और वो 55 साल की नहीं होंगी, वो यंग होंगी. और ये इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर जो है आपका 5 साल का सर्वाइवल जो है वो कम कर देता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो यू आर ट्वाइस एज लाइकली टू डेवलप breast cancer. So you have to be very very careful. We have so many women in Riyadh जिनकी यही similar stories हैं. और अल्लाह ना करे कि हम उसमें से एक हों, और अल्लाह करे कि हम सब इंशाअल्लाह हमेशा सेहतयाब हैं. जी. अच्छा, इसके बारे में भी ये स्लाइड्स वगैरह भी आप साथ-साथ लेकर चलें और हमें जो है बताइए. और ये भी बताइएगा डॉक्टर शाज़िया कि हम ये सुनते हैं, आई डोंट नो, कि जो कीमो में जो फँस गया तो वो कहते हैं कि अल्लाह ना करे, बस अब ये तो कहते हैं ये बचने वाला नहीं है यानी. क्योंकि हाँ, कीमो से आपके बॉडी बाल सब खत्म होते बहुत जाते हैं. सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कीमो का नाम सुन के कहते हैं नहीं हम नेचुरल थेरेपी पे, हाँ, नेचुरोपैथी हाँ, पे हाँ. चले जाएंगे. जी, जी, तो जी. वो भी ठीक नहीं है. कीमोथेरेपी का काम जो है वो ब्रेस्ट जो कैंसर सेल्स है उसको किल करना है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि वो ट्यूमर के साइज को रिड्यूस कर देती है और फिर उसके ऊपर रेडियोथेरेपी जो इफेक्टिव होती है ये रेजिडुअल कैंसर सेल्स को भी निकाल देती है. तो इससे फायदा ही होता है. हाँ, ऑफ कोर्स देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच. तो ये आपकी सेहत पे ओवरऑल इफेक्ट बहुत डालती है. आप टायर्ड फील करते हैं, आप नॉशियस फील करते हैं,
कीमो की साइड के ऊपर बाज़ औक़ात रेडनेस हो जाती है, और जिस दिन आपकी कीमो होती है, तो क्योंकि ये कीमो जो है ना, ये एक ऐसा ही हमारे लिए जो है वो परवाना है, मौत है, जैसे कि किसी को हमने बोला कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, पता है ना आपको? जब हम बताते हैं, हालांकि उनकी फैमिली में 10 मेंबर्स को होगी डायबिटीज, लेकिन जब किसी को हम बताते हैं तो दे आर टेकन अबैक। तो कीमो एक ऐसी वाकई एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ, तो देयर आर टिप्स टू गेट थ्रू द कीमो। आप फोकस रहें, पॉजिटिव रहें। आप उसके अलावा ये कि प्रेप करें, अपने पोर्ट को साफ सुथरा रखें, उस पर क्रीम लगाएं, अपने एक जर्नल बनाएं, स्पीक अप, जैसे अजरा ने बहुत अच्छी तरह बोला कि आई एम रेडी टू टॉक अबाउट इट। तो इसको जो है ना, डोंट डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। अल्लाह ताला ने अगर कोई मुश्किल दी है तो उसका हल भी दिया है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो उसके लिए आप अपने अपने आप को पॉजिटिव रखें। बहुत सारी हमारे पास माशाल्लाह रियाद में ऐसी खवातीन हैं जो पॉजिटिवली जिन्होंने कीमो रेडियो कराई है, और जो जिनका सर्वाइवल रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेस्ट कैंसर जो कि स्टेज 2 के ऊपर है, जिसमें लिम्फ नोड्स ऑफ द ब्रेस्ट इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स ऐसी खवातीन को लाजमी कीमो रेडियो की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी जर्नी आसान नहीं होती। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि सबको अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत दे, इस्तकामत दे, और अक्ल सलीम दे कि वो सही फैसला करें अपनी लाइफ के लिए और अपने बच्चों की लाइफ के लिए। आमीन। जी कैरी ऑन करें। अजरा, आप मुझे अगर आप इजाजत दें तो आई रियली नीड टू गो, मेरी गाड़ी आ गई है। Yeah, ठीक है। sure. Sure. Thank It you. was a Thank you. pleasure. It was God a bless. pleasure. I'll come and see you soon. Thank you so much. Jazakallah. Thank you. जज़ाकल्लाह खैर। जी अज़रा, आप कैरी ऑन करें। जैसे आपको फर्स्ट टाइम ये पता चला कि आप ब्रेस्ट कैंसर का आपके साथ इस तरह का सीन हो गया, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ, और आपने क्या कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो आपने करवाई, कहाँ गई आप? Reaction was it was very I can't forget that day, and all I was thinking was about my children. And the first thing what I told my doctor was that how can this happen? मेरे तो छोटे बच्चे हैं, you know. सही सही। And anyway, I don't want to go into details of that day. हाँ Anyway, sorry about this. कोई बात नहीं, आप पानी ले लें, कोई बात नहीं। That's okay. And finally, I had to meet my doctors, and I was very particular about female doctors. And but ultimately मुझे ये पता चला कि अब यहाँ नहीं चलेगा, this stage female doctors, male doctors, ये नहीं चलेगा. So I had to surrender, and a set of nearly 6 male doctors came to examine me, and I was very brave. And the first question I asked them was, लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, एंड इस स्टेज पे मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो सकती. I'm totally negative thoughts आ रहे हैं, एंड आई एम फीलिंग totally, I don't have any hope, hopeless. So what does positivity play? What does positivity play in this journey of mine? So one doctor told me that अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका जो ट्यूमर है ये श्रिंक हो सकता है. अगर आप नेगेटिव हैं और आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, कंप्लीटली आपका जो नजरिया है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एवरीथिंग, इफ इट इज नेगेटिव, योर ट्यूमर्स आर गोइंग टू ग्रो फास्ट. फिर वो दिन मैंने ठान लिया कि आई एम गोइंग टू बी पॉजिटिव इंशाल्लाह. और रही बात जीने और मरने की, मौत तो लिखी है, it is destined. Maybe it will be next week, it will be after 10 years, it will be, I don't know when. So let me face my life with a smile and be positive. और जो अल्लाह का यकीन मेरे दिल और दिमाग में था. So I told the doctors that I want to travel to my neighboring city. I have to meet my children and come back. So the doctor said, no, you have to get admitted tomorrow. I came out, और मैंने अपने अब्बू से कहा कि पासपोर्ट मेरे पास है, टिकट मेरे पास है, मुझे जाना है बस. आई हैव टू गो बैक टू रियाद. पहली बात तो मुझे उम्रा करना है,
विदाउट उम्रा मैं ये ट्रीटमेंट नहीं शुरू करूँ. पहले तो मुझे उम्रा करना है, और दूसरा आई हैव टू मीट माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन. और मैंने ये फैसला किया कि मैं रियाद में, वी हैव इंश्योरेंस कार्ड्स एंड एवरीथिंग, बट आई डिसाइडेड कि मैं सऊदी में ट्रीटमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को तकलीफ देना नहीं चाहती. ठीक. I didn't want my husband to see me in that state, breaking down and fighting. और मेरे बच्चे जो थे, बड़ा बेटा तो मेरे साथ था. I didn't want them to see their mother die every day. So I came to Riyadh. Alhamdulillah, the next day I went for an Umrah. और I have never felt this energetic in my Umrah. मेरा बेटा थक गया, एंड आई वाज लाइक चलो और एक तवाफ, और एक तवाफ. इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, वो इतनी क्या चीज थी पॉजिटिव. जो आपको ताकत दे रही थी इन लो टाइम्स में? वो क्या चीज थी जो ताकत दे रही थी? इट वाज माय यकीन ऑन अल्लाह कि डॉक्टर्स तो बस जरिया हैं, एंड माय अल्लाह विल क्योर मी, एंड इफ ही डजंट क्योर मी आई एम रेडी टू डाई. अगर है मौत तो आई एम रेडी टू डाई. आई फिनिश्ड माय उम्रा, आई वेंट बैक एंड आई स्टार्टेड माय ट्रीटमेंट. अल्हम्दुलिल्लाह. सही है, जबरदस्त. अच्छा, आप कौन से ऐसे चेंजेस थे अपने लाइफस्टाइल में और डाइट में? क्या चेंजेस आप लेकर आए इसके बाद, फौरन से बाद जब पता चल गया था? Diet में one thing I make sure in my everyday life is that I do not miss the hormonal therapy के जो कैंसर के टैबलेट्स हैं. I should not be missing it, and I think अब तो 5 साल हो गए ये दिसंबर में, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड सिर्फ 2 दिन मैंने मिस किए थे. सो आई डू नॉट मिस माई टैबलेट्स, एंड आई एम डायबिटिक. My diabetes range is reading is really high after the chemotherapy. So I make sure that I eat my multivitamins, and I have a lot of water. I have started consuming more fruits and salads and all that. But generally speaking, जैसा कैंसर से निकलने के बाद 1 year I was not allowed to have any non-veg. तो ये बहुत तकलीफ वाली चीज़ थी मेरे लिए. हाँ. And once I was cancer free, 1 साल के बाद, I started eating all the food because I love food. तो ज़्यादा डाइट में मेरे चेंजेस नहीं. आज भी वही है जो घर में बनता है. स्पेसिफिकली मेरा कुछ नहीं है. आई एम इनटू मंदी एंड एवरीथिंग. बट ये है कि आई हैव बिकम मोर पॉजिटिव इन लाइफ. मोर सही. पॉजिटिव. चाहे कुछ भी हो जाओ जिंदगी, कैंसर से बड़ा तो नहीं हो सकता. सही. No matter what calamity strikes, मेरा I am always thankful to Allah for keeping me hale and healthy. And सर के ऊपर एक छत है, खाने के लिए खाना है, बच्चे हैं. I have my cats, alhamdulillah. I have my house, my life. So I'm more grateful to Allah. I'm more positive, you know. So कुछ भी हो जाओ ना, alhamdulillah, nothing can break me because I trust Allah more. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह. अच्छा, मुझे ये बताएं अज़रा, बिसाइड्स योर फैमिली यू आर वर्किंग वुमेन आल्सो, राइट? तो अब आपने उनके साथ कैसे अपना जो साथ कोऑर्डिनेटर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, यू आर अ फाउंडर ऑफ ब्लॉसम स्कूल आल्सो, माशाल्लाह. Yes. तो मुझे उसके रिगार्डिंग बताएं, आपका स्टाफ और उनका When क्या I when I came for my Umrah, I was in school as normal. Nobody knew anything. अच्छा. तो हमारे स्कूल की कोऑर्डिनेटर थी मिस कविता. हाँ, हाँ. हाँ, एक थी रीनी. तो I called them to the house. So Kavita was like, "Ma'am, I have lots of papers to sign," and she was happy I came back. She knew I'm going for some tests. तो वो सारे पेपर्स साइन करवा रही थी, एंड मुझे पता चल गया कि वो शी वॉज लिटिल स्कैर्ड कि कुछ कुछ तो है. तो शी वॉज लाइक प्लानिंग कि मैम अगले महीने दिस एंड अगले महीने दैट. एंड आई कॉल्ड हर होम. आई टोल्ड हर दैट come home, क्योंकि I didn't want to break down in school. I'm a very strong person, alhamdulillah. So she came back home, and I just started crying. And it was a very emotional, a very tough time for me, because I did not utter a word, and she was literally screaming and crying when she hugged me. And I told her, "Okay, Kavita, I'm diagnosed with cancer. I'm going back for my treatment. You have to take care."
So she cried a lot, और मैं उतना ज्यादा नहीं रोई जितना कविता cried. And I told her that don't break me. I don't want to cry. I don't want to become weak. I'll be connected with you, inshallah. I'm coming back. See my face, see my positivity. I'm coming back. So don't let me down. Take care. And when I went back and when my treatment started, for example, during my chemos, 6-8 घंटे का chemo चलता था, and it was a very painful procedure. And I used to have the mobile on my chest. Surya Rahman chalta tha. Or beach में if I get a ping from Kavita, I used to take the mobile and I used to reply कि क्या करना है, ये हो गया वो. I was on WhatsApp day and night along with my Quran, along with my tilawat, zikr, everything. And twice there was a necessity for me to come back. Ministry of Labor का कुछ issue था. So I told my doctors कि 2 chemos हो गए थे मेरे, एक chemo हो गया था. I was too weak. I'll give you details of that later. And I told the doctor I want to travel to Chennai. मैंने उनको झूठ कहा कि बिल्कुल 30 मिनट की फ्लाइट है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है. So the doctor said no, you cannot travel because you'll be at high risk. Your blood level is totally low, and you will, maybe you'll collapse, your lungs will collapse. You are not in a state to go to that altitude. I said okay, and I came back home. I booked my tickets on a business class, and I wore a mask, and I boarded the flight on a wheelchair. Alhamdulillah, I It called the was Corona time also, right? no, it was 2018 December, November last week. So I was prone to infections. I wore my mask. I called the air hostess and I told her I'm a cancer patient, and something happens to me. You have to give me first aid immediately. So they were so scared, and alhamdulillah कुछ हुआ नहीं. फिर यहाँ airport flight के door से they took me through the back door on a wheelchair. I came. I took rest at home. The next day I went to school with my driver, and I was walking. Though I was a little weak, teachers समझ गए कि yes, something has happened, maybe kidney, maybe liver, maybe heart. Cancer का तो उनको, they were not. And that is the time, first time I started losing my hair. And alhamdulillah, I'm always wearing hijab. So that was a very difficult time for me. I came here for 5-6 days. I sorted out all the problems at school. I went to malls with my children, everything. Before my second chemo, I went back to Bangalore. So I traveled twice here to Riyadh. And after my treatment, I sent a message on the Blossoms group that Alhamdulillah, I'm landing in Riyadh tomorrow. My treatment is over. Alhamdulillah, Allah has cured me. So see you tomorrow. And when I Alhamdulillah. came back, Alhamdulillah, my staff, it was very emotional. These cards and posters and banners. And there was this cake which read, "The Oh, lioness is back." oh. So that Such was the time I broke down. And Alhamdulillah, मेरी जो previous staff थी, they were very dedicated. And most of them, 90% of my previous staff left. So they supported me after I came back, and Alhamdulillah. सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं खुद ही यानी इमोशनल हो रही हूँ आपकी सुन के तो वो तो जब जो आप जिस टाइम से गुजर रही होगी तो क्या होगा आई कैन इमेजिन तो मुझे आप बताओ अजरा कि विच हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स डिड यू अप्रोच और आप उनको रिकमेंड करेंगे यहाँ पर अगर किसी को हॉस्पिटल No, देखना है या डॉक्टर देखना है कैंसर यहाँ ट्रीटमेंट पे यहाँ पे I think King Faisal Hospital has a good oncology department. And my personal doctor here was Dr. Harbesh from Blood and Cancer Hospital. Exit 10 पे है. And I just used to take my reports. To be frank, I travel to Bangalore every 3 months for my tests, and I get all the reports and I show it to Dr. Harbish. I thank you, Salman. I can read your message. Thank you so much. I carry all my reports and I have a consultation here, Alhamdulillah. But I trust going back to Bangalore
to my hospital, and मेरे जो surgeon थे, he was called as Doctor. I've forgotten his name. He was a 75-year-old oncology surgeon, alhamdulillah. And I prefer going back to him. And I get all my tests done. I make sure that he has a physical examination, and he, says a go. Then I come back. ठीक है। अच्छा, और ये कीमो के अलावा भी कोई और टेस्ट वगैरह होते हैं जो आपको करवाने होते हैं, कोई स्पेशल इंजेक्शंस या मेडिसिन्स, और सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है अगर सऊदीया में हम कहें? You're talking about my tests, what I did before cancer, या फिर टेस्ट जो अभी कैंसर के बाद होते हैं, या फिर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? दोनों, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, before I went to a gynecologist. I suggest, if any women are doubtful and they doubt that they have a lump, don't be scared of biopsies, and don't be scared about tests and all that. You can go to a gynecologist. She's going to do a physical examination. She'll do a physical examination, and she will recommend if this is a serious issue, or you can just leave it and have some vitamin E tablets or something. Fibroadenoids जिसे कहते हैं. So my gynecologist told me go for a mammogram. So I understood there's something fishy. So Bangalore mein there are so many hospitals. I went to a hospital which had a research center with it, and I have not spent, so much on my treatment, because this doctor stands number 3 in Asia Okay. for the oncology and the treatment he does. He's a very successful, or the fee is very low. That doesn't matter to me, but the doctor is really good. I trust कि वहाँ पे जो percentage है, जो patients निकलते हैं heal होके, cure होके. So I went to that hospital, alhamdulillah, and I got my mammogram first. Mammogram confirmed it's breast cancer. They asked me to go for a needle test with an ultrasound. तो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो लोग, और अल्ट्रासाउंड पे उनको जब पता चलता है कि फॉर एग्जांपल द ट्यूमर्स हियर, सो उसी जगह पे दे इंजेक्ट थिक नीडल syringe, and they pull out the material from there. So I got my needle test 100%, they confirmed it was cancer. So they called me back to the hospital, and they said कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, आप डरे नहीं, टोटली फैट है, लेकिन वी वांट टू डू इट अगेन. दे वांटेड टू मेक श्योर. तो मुझे झूठ बोल के दे कॉल्ड मी. दे डिड माय सेकंड नीडल टेस्ट, and the doctor asked me to visit her, and she gave me the report, and she asked me to visit a bigger hospital and consult a breast surgeon. So I went and I consulted the breast surgeons, and they had a physical examination, and then they said कि we have to do your biopsy immediately. So biopsy जो है, they सुंद करते हैं इस एरिया को क्योंकि it's painful. So हाँ, तो सुंद करके I didn't feel any pain. A particle of the tumor is pulled out, and they said कि 8 दिन लगेंगे for the result to come back. Result of which stage you are in. It's confirmed you have cancer, लेकिन biopsy जो है वो reconfirm करेगा, and you're going to know which stage and what kind of treatment we can start. So that's when I came to Riyadh. I met my family, I did my Umrah, and I went back. So as soon as I went back, I was called by the hospital, and they started taking my tests, heart ka test, lung test, thyroid ka test, blood tests, x-rays, because this surgery is a very big surgery. It's not a small one. So कीमो भी तकलीफ दे, कीमो भी chemo will come later. I was going for a breast surgery, तो उससे पहले ये tests थे मेरे कि I'm fit for the surgery. My heart is strong. I can withstand the surgery. Alhamdulillah. And I finally I got admitted for the breast surgery. Alhamdulillah, they removed both the tumors. The tumors were removed, but it was a big surgery.
and we had involved plastic surgeons as well. So ठीक flat from my back was also removed. So it was not just the surgery here; my complete back was also there was also a surgery, and I was there in the hospital for nearly 9 days, alhamdulillah. And after that, after a month एक महीने के gap के बाद they started my chemo. ठीक So when they were taking me to the operation theater, uh, my family was crying and I cried, and puri raat zikron mein guzri. I was admitted in the hospital, and in the night, my mother came in my dream. She was wearing a white shalwar kameez. She had a dupatta. She looked so young, and she was just smiling at me. तो वो माशाल्लाह इतना पॉजिटिव मैसेज था मेरे लिए मैसेज हाँ कि no matter what happens, even if I die, something good will happen inshallah. तो सारी रात जिक्रों में गुजरी, and next day they took me to the operation theater, और I felt that मैं कम रो रही थी, और मेरा सारा खानदान था, मेरे खास cousins, मेरे chachis, chachas, मेरे खालास, मामू, all were there and they were crying so much, और मैं थोड़ा कम रो रही थी because I had to become strong. स्ट्रांग हाँ And alhamdulillah, I went inside with my hijab. So as soon as I went inside, they shut the doors and they took me inside, and they said that you have to remove your scarf. I said I'm not going to remove my scarf. जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती, I'm not going to remove my hijab. I was wearing that little dress, and then they prepare a patient. एक घंटा they prepare a patient. They give anti-stress medication and पता नहीं what all. And when I entered that hall, ये जितने भी patients थे, they all were preparing for surgery. ओह I saw 80 साल की औरत, 90 साल की औरत. I saw men who were maybe 95, 75. सबको drips लगे थे, and they were so scared. And I walked inside. The nurse told me you have to sit on the wheelchair and go. तो मैंने बोला कि I don't want to sit on the wheelchair. I can walk. I want to walk. So I went inside walking. फिर मेरे सारे ड्रिप सिप्स लगे. अल्हम्दुलिल्लाह लेटे लेटे I read my 2-3 वक्त की नमाज. I read my नमाज through इशारे. I was in a small dress, लेकिन इशारे से सारी नमाज हो गई मेरी. अल्हम्दुलिल्लाह. फिर 2 घंटे के बाद the nurse came and she said, "Are you ready?" I said yes. So let's go to the OT. She got a wheelchair. She gave me a blanket. I covered myself with the blanket and I said, I don't want the wheelchair. I went to the OT walking. And as soon as I entered, I saw that there were 4-5 doctors, surgeons, और nurses तो इतना शोर कर रही थी. They were preparing the knives and scissors, और इतना फेकम फाकी हो रही थी. It was so noisy. I entered inside and I said, "Good morning, doctor." So the doctor was like shocked. He said, "Good morning." And the way I was smiling at them, they felt so happy. और फिर मैं जाके I lay down, and then they tied up my hands, and I was just doing zikr, and the doctors spoke to me, and then the doctor said, "Okay, we will be giving you oxygen, so you start counting." So when they gave me oxygen, I didn't count, but I was doing Allah's zikr. 4-5 बार मैंने पढ़ा and I was out. एनेस्थीसिया So I was just positive. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह Alhamdulillah. वेरी नाइस माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा आई जस्ट वांट टू आस्क यू ए जनरल क्वेश्चन शायद आपने भी ये पूछा हुआ कि आई एम जस्ट आस्किंग यू जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए क्या मुझे ये बताओ कि जो कैंसर होता है अगर किसी एक पार्ट के अंदर है तो क्या स्प्रेड भी करता है जैसे आपने भी कहा होगा ब्रेस्ट में अगर हो गया है तो ये क्या खतरनाक See, होता है अच्छा Doctor, दूसरा भी एक और सवाल भी इसके साथ मैं अटैच करूंगी कि ये जो कहते हैं कि आपके ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं ये क्या होता है see, first of all, there are 5 stages of cancer. हम्म Dr. Shazia mentioned it to us. जी First is stage 0. अगर जी आपका लंप छोटा है और you have some signs, कोई बुखार is not going, आपको कुछ खांसी है, कुछ abnormal है, कुछ weakness है, you're putting on weight, these are some of the symptoms you should not ignore. कि okay मैं पैनाडोल खा लूंगी, okay मैं फिर पैनाडोल खा लूंगी. No, you have to see a doctor immediately. So stage 0, the lump is very small.
ना आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कीमो की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, ना रेडिएशंस की. You'll be given tablets. Mhm. Please listen very carefully. You'll just be given tablets, and Mm. inshallah cancer cures. Then comes stage 1. Stage 1 may be they give you only tablets, no surgery, no chemo, no radiations. There are various types of cancers. My cancer was stage 2B. और एक महीना अगर मैं लेट जाती तो it would have been 3. So stage 0 and stage 1, the lumps are very small. Stage 2, the lump size is big. Stage 2A and B. A matlab more than one tumor. I Mhm. had two. Stage 2B yani I am about to enter the stage 3. And I was shocked after my surgery. I came to know that in my armpit, in everyone's armpit, you have these lymph nodes. Mm. 13 of my lymph nodes were removed surgically. I had no stitches here. I had stitches here. They were pulled out from this part. They have And pulled out it the did lymph not node. spread. It did not spread. It had spread to lymph nodes. To- ये lymph nodes क्या होते हैं? You know, they say कि आप इधर कोई घाटी है. You know, उर्दू में हम लोग इंडिया में कहते हैं घाटी. कोई seed हो, Mhm. lump हो, you have to check here. Mm. And you have to check here. Mm. And you have to check your hips. ये lymph nodes हैं, ये tumors नहीं है. So lymph nodes, they swell up, and lymph nodes are the transporters of cancer. If I Okay. had gone late, the lymph It nodes, would have. 13 lymph nodes में जब biopsy हुई, 6 lymph nodes were cancerous. अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब कि उनमें कैंसर आ गया था, and they were preparing to transport maybe my brain, maybe my thyroid, maybe my lung, which is very close, or the brain. So lymph nodes में अगर कैंसर आ गया, so that's stage 2B. Stage 3 यानी breast, जो main organ है, lymph nodes plus another organ, liver, kidney, stomach, colon, or lungs, thyroid, ठीक jaws, mouth, or your brain. So ठीक. never play with cancer. It वो spreads this it quick. I it does. was very negligent. So when I came to know they've removed my lymph nodes and 6 of them were cancerous, the doctors were very scared because they are ready to transport. They are messengers. They carry the cancer. Mm. So never play with cancer. So my tumors were not that big. So they only removed the 2 tumors. Alhamdulillah. If the Okay. tumors are little big, that's when they scrape and they do the mastectomy. They remove the whole breast. Or breast के tissues के नीचे they scrape it. Every inch of the tissue is scraped. It's like it's like a crater in your breast. It's very bad. So that is when they remove the breast. So that's stage 2. Stage 3 yani breast, lymph nodes, or there's another organ, maybe lungs, or maybe liver, or maybe brain, or 4 yani uncontrollable speed mein they have spread. They have gone to the brain, they have gone to the bones, they have gone. My mother had stage 4. So when they did her test, cancer was everywhere. She didn't have cough, she didn't have fever, she was active, she was cooking, she was cleaning. When they did her needle test, she only had a lump in her neck, and she was busy. She said no, she was also scared like me for injections. And she said, okay, I'll do it next week, I'll do it next week, I'll do it next month, next year. Cancer has spread to her entire body. So you have to be very careful. You're putting on weight, you are feeling weakness, fatigue, you have some rash, you see something. During the chemotherapy, I came across a man next to me. I asked him, how did you see a doctor? What happened? He said, I had a blister on my leg. एक छोटी सी फुंसी, a blister,
वो क्योर ही नहीं हो रही थी. So when they did the test, swab test on that, it was cancer. So never ignore any abnormality. शर्म हया अपनी जगह पे, जान है बिल्कुल, तो जान है. जान है तो You जहान as women have to take care. Nobody will take care. Husbands are busy with jobs, they come back tired, children are busy with school. Who's going to check? Who's going to test? Who's going to push you? No one. है, no You one, have to take care of yourself. exactly, Allah's given you some signs. So you have to take care of yourself. Never be negligent. सही अपना है, खाना, अपना पीना. Go for 10 minutes walk. No problem. Don't say that I'm busy at work. No problem. I left my house for 1 year. My house was going on, my children were going to school, life was exactly, going on. Alhamdulillah. I paid a alhamdulillah, very big price for being negligent. exactly, आपको अपना ख्याल रखना है. You know, there are many reasons for cancer. Many reasons. The number one is stress. You're not going to believe this. Number one is stress. I was always in stress. My work, then I have to come back home, my children, my cats, my garden. It's not worth it. Stress, sleepless nights. You have to wind up everything, you have to clean up everything, ensure lights are off, you go last to sleep, you're the first one to wake up. What price will you pay? What if I died? Alhamdulillah, no problem. But I did take care of myself. Stress, lack of sleep, lifestyle, not having proper food, not caring for fruits, not caring for vegetables, not caring to have enough water. I don't have time, I don't feel thirsty. Make sure you consume all this. Make sure you cross 35, start having a good multivitamin. Don't go in for cheap. Don't go in for cheap. Don't settle for cheap. Have a good multivitamin. Try to be active, try to be happy, try to make dua for yourself. There are many things which you have to take care of yourself. You have to have self care, जो हम औरतों में नहीं है. I बिल्कुल. had some. I was like, okay, next year ये साल मेरी shopping है, मेरी packing है, I have parties. ये काम नहीं आता. I paid a very big price. It's a never ending story. ये तो खत्म Never होने वाला ending नहीं. story. And the chemo was so bad. The doctors told me that you won't be able to eat. But if you don't eat, you'll die. बिल्कुल My सही. doctor told me on the face. I came back home. I told my daughter the experience was so bad. I'm not going to talk about it. I cannot put it in words. जो मेरा कीमो था, जो तकलीफ होती थी. But I told my daughter, I can't eat. I can't smell food. I had blisters on my tongue, my mouth, my throat, my stomach. छाले आ गए थे. I couldn't stand up. I couldn't sit. And my head pain was like somebody's beating me 24 hours on my head. कोई ऐसी दवा नहीं थी जो वो दर्द को कम करे. I used to go mad. And I told my in-laws, my family, my friends, okay, I'm going for a surgery. Alhamdulillah, I'm diagnosed with breast cancer. I'm going for a surgery on Monday. 3 दिन है आपके पास. Please come and meet me. After this, I don't want to meet anyone. आप चाहे अच्छा मानो या बुरा मानो. I मानो. don't want sympathy. I don't want sympathy. I don't want people to, look at me and cry and break my strength. I wanted to be strong. Many roti thi. I never used to cry because I didn't trouble my old father, my brother who was there to take care of me, my eldest son. I didn't cry in front of them because I cried, they cry. Obviously. I was so jovial, you know, and I used to joke around, make them laugh. I started watching Netflix. I was never a TV person. I kept myself busy. The only time I prayed was in my sajda. और वो मेरे और अल्लाह के बीच की बात है. I used to cry so much and I used to talk to him. जो दुआस थे, my दादी माँ gave me, and इतने सारे नबियों के छोटे छोटे दुआस थे. They worked magic. Alhamdulillah. I used to read continuously.
I used to Alhamdulillah. read duas continuously, zikrs continuously, alhamdulillah. And when I lost my hair, was when I was losing my hair, I called the beautician home and I asked her to shave my hair. My children didn't know. I removed my hair. And that was the second day I cried so much when I saw myself. I called my two elder children to my room and I said, "Look at me." And I was just smiling, and they bursted out crying, and I cried. And from the next day, I did not cry because my hair is going to come back, my health is going to come back. The most important thing was that Allah should cure me now. Cure, huh? Exactly. So my daughter used to come up to me and she used to say, "Mama, let me do some makeup. You look like a beautiful mannequin." She used to do makeup on me and we used to laugh. I used to make my family laugh. I went to cinemas, and there was a bag after my surgery connected from here, two pipes, 8 meter ke pipes with a bag for all the drainage of the blood and all the fluids. I had to carry that for 1 month in my hand. So I used to put it in my bag, wear an abaya, take the tubes out, put it in my handbag, wear my mask, and I used to tell my brother, "Chalo, achhi picture lagi, let's go for the movie." And I used to go with my children. कीमो के 5-6 दिन के बाद एटलीस्ट महीने में 2 cinemas, 2 movies, because I could see my family was happy. वो परेशान नहीं थे कि कैंसर, तो मरते मरते आधे लोग मर जाते, Well, रोते. exactly. So Exactly. I was always positive, and when I used to go to the hospital, I used to draw my eyebrows because I didn't have eyebrows. Uh, I used to wear lipstick, sunscreen, and at the entrance, only attendant of the patient and the patient is allowed inside. And the guard used to ask me, "Who's the patient?" So I used to tell him, "Me." So he used to look at me like that. So when I go to the hospital, my doctors, my nurses, everyone, my friends, I made so many friends with the patients. They were so happy to see me. When I used to go there, they used to feel happy. I used to talk to people, "Don't cry, look at me. Let's go laughing. You want to die? Go laughing. Enjoy your life. You want to live? Take care of yourself." I created a positive environment, positive energy. So being mashallah. positive, self care, or Allah ke upar yaqeen, very, very important. And don't feel shy. अरे मुझे lump है. How do I tell my husband? You have to tell your husband. Don't think of the future, what he will think. He will go and have a second marriage. Let him go and have a marriage. No problem. You take care of yourself. You have a lump, come forward. Tell your husband, "I need to see a gynecologist." See a gynecologist at the earlier stage. Don't pay the price what I paid. So Exactly. be sensible. Very important. Alhamdulillah. Last two questions. एक तो ये, let's talk about the expenses here. Let's talk about the people who cannot afford the expenses of cancer treatment. And also tell us about Saudi Arabia, if they have any hospitals who offer free treatments for cancer. And maybe just talk about India or Asian countries, Pakistan also, like नहीं, if they offer free इंडिया में treatments. भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं. I've heard of, I think इमरान खान का भी कोई हॉस्पिटल जी है. जी I've जी, heard of. cancer hospital in Pakistan, yes. Yes. So there are quite a lot of hospitals. अब मैं जहाँ गई थी, I went there for my doctor, for my surgeon, because he was a very good surgeon. So I went there because of him. And I had a nominal charge. I'm not very sure how many lakhs we spent. Uh, I had a nominal charge because I went for a good ward and special wards. Chemo maybe it's a general ward actually. Exactly. It has to be a general ward because doctors come to check multiple patients when they are undergoing chemotherapy. But I chose a ward because I was not comfortable around it. तो मेरा तो मुझे, I mean, we haven't done any हिसाब as such कि कितना हुआ काफी, we took the higher options and all that. And even so totally I had a surgery. After a month chemo start हुए, alhamdulillah, I had 16 chemotherapies. I had 16 chemotherapies. Alhamdulillah. Chemotherapies खत्म होने के बाद I had 29 radiations.
सो रेडिएशंस में अगेन देयर वर टू ऑप्शंस कि एक नॉर्मल रेडिएशन होता है जो बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है जो रेडिएशन होता है, लेकिन ये रेडिएशंस हार्ट तक भी जा सकते हैं, दे गो थ्रू अदर ऑर्गन्स आल्सो. ठीक. माइन वाज द ब्रेस्ट. तो सिर्फ माय नेक, माय आर्मपिट एंड माय ब्रेस्ट का रेडिएशन नहीं होगा, उसके पीछे आगे पीछे जो जो ऑर्गन्स हैं इट विल पेनिट्रेट, which is bad. So yes, I went for the expensive version of the radiations, where I had to hold my breath for maybe 40 seconds. I used to take a deep breath and hold my breath. That's when the machine used to come close and they used to start the radiations. So they stop the radiation, give me a gap of 1 minute, and then again they asked me to hold the breath. So my radiations were different, and chemotherapy. So there are lots of hospitals in India and Pakistan. You have to Google and check. वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट, और जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ गरीबों के लिए फ्री ट्रीटमेंट हो रहा था विदाउट एनी मनी. मतलब हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा लेके और फिर गरीबों के लिए दे वर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट. आई हैव सीन पेशेंट्स, जब ये मेरा जो सर्जन था ही यूज्ड टू वॉक पास्ट, तो यू नो इंडिया में तो ये होता है कि हाथ नीचे रख के सजदा कर देते हैं. सो दीज नॉन मुस्लिम पेशेंट्स नॉट लिटरली पाँव पकड़ के डॉक्टर के रोना एंड सेइंग दैट नाउज़ुबिल्लाह यू आर द गॉड. एंड तो फ्री ट्रीटमेंट्स हुए हैं वहाँ पे. I guess even in Alhamdulillah, even in Pakistan, there are lots of hospitals. And I'm sorry, I really don't know about Okay. Saudi. Okay. I'll try to get some information I understand. for the Dr. free Shazia, treatment. are you back? Yes, we can see her. She's in the hospital. Alhamdulillah. This is Sulaiman Al Habib Hospital. Yes, she's come. Welcome back. We cannot hear you, Dr. Shazia. No sound. Okay. Okay. So, any more questions? आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी. आप ये बताओ, वैसे तो लाइफ के बारे में हमें किसी को भी नहीं पता, इट्स जस्ट सो अनप्रेडिक्टेबल. Unpredictable. कितना रहना है, कितना जाना है, और हमारे तो साथ के कितने लोग दुनिया से चले भी गए. अब हमें तो एक मौत का भी नहीं पता ना कि कब आने वाली है. तो आप एक बताओ, आप एक पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, अब आप कीमो से भी गुजर रहे हो, ट्रीटमेंट से गुजर रहे हो, बड़ा कुछ फेस कर रहे हो, और मे बी आप सरवाइव कर गई, मगर फिर भी क्या बीच में वर देयर टाइम्स जब आपको ऐसा हो कि यार मैं नहीं बचूंगी, क्या ऐसे खौफ बीच में आया कि नहीं यार मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, या ऐसा पेशेंट बेचारा जिसको पता चल जाता है, डॉक्टर कहता है हाँ जी आपके पास 1 मंथ है, 6 मंथ्स है, ऐसा है, तो क्या लाइफ में डिजास्टरस चेंजेस आते हैं, उनके बारे में आप बताओ. इंसान कैसे अपने आप को एकदम से, यानी जिंदगी का ये जो एक वो पड़ जाए अल्लाह ना करे किसी के ऊपर, तो कैसे चेंज आ जाता है? That happened with my mother. The doctors ने कहा कि 6 महीने से ज़्यादा your mother will not survive because this is anaplastic carcinoma, the most aggressive of all the cancers. So we have gone through it. हर पल, every moment जो हम लोग जिए हैं, जो हंसे हैं, जो रोए हैं साथ, जो इबादत किए हैं, the way we have valued life, जो दुआ किए हैं, जो अरमान थी हमारे दिलों में when we were making दुआ के ए अल्लाह हमारी सारी नेकियां ले लें एंड मम्मी को आप बख्श दे, यू नो. तो दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि लाइफ इज सो प्रेशियस एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव, you have to forgive people, you have to forget your bad experiences, you have to take care of yourself, take care of your deen, take care of your salah, don't miss chances. अल्लाह ताला ने जो आपको वक्त दिया है, don't fool around with it, make most of it, don't lie, don't cheat people. पैसा कभी यहाँ कभी वहाँ, तो you know, don't put money as your first preference and Jazakallah. anything for money, you know. जज़ाकल्लाह खैर for your Yeah. valuable advices. और मैं चाहूंगी डॉक्टर शाजिया आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स समराइज करके कुछ कह सकेंगी तो हम इसको सम अप करेंगे.
मेरे ख्याल से उनका शायद नेट इशू हो रहा है हॉस्पिटल से। 2 मिनट देख लेते हैं और अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने जो इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर की है, मैं समझती हूँ कि इट विल डेफिनेटली चेंज लाइव्स, अवेयरनेस भी लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे लोग जो इसको लाइट लेते हैं, कोई औरतें हैं जो इन चीज़ों को लाइट लेती हैं, और पैराडोल जो है हमारे यहाँ जो पाकिस्तान इंडिया में इज़ द सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। All my सर में life I've had Panadol. कोई भी चीज पैराडोल, होती, I'll have a Panadol. बिल्कुल बिल्कुल। सर में दर्द है बेटा पैनाडोल, पढ़ाई नहीं हो रही बेटा पैनाडोल, पेट में दर्द है बेटा पैनाडोल, नींद नहीं आ रही बेटा पैनाडोल खाओगे, सो के उठोगे तो ठीक हो जाओगे। सो अभी You हमें have to थोड़ा go सा, for your you have to go for your tests. हर हाँ 3 महीने 4 महीने में you have insurance cards. Alhamdulillah, go for a X-ray, go for a mammogram once a year. क्योंकि every third person is diagnosed with breast cancer and they're हाँ dying of it. और देखें, I want to conclude by saying this, that Alhamdulillah, I'm cured. December, I'll be completing 5 years. But there are chances the cancer hits me back again. So there's never a day I think about it. मेरी मुस्कुराहट के पीछे ये खौफ होता है कि खौफ I होता don't है। know. So मेरी खास I want to tell all my friends here, my family, whoever's watching, kindly make dua for me कि I don't get it back. So एक बार जब इंशाल्लाह cancer इंशाल्लाह आ you'll not, जाता है, इंशाल्लाह। that that thing, risk factor is always lingering above your head. आपके सर के ऊपर हमेशा वो चीज होती है कि सेकंड टाइम कैंसर हो सकता है. जस्ट अबाउट 3 weeks बैक मेरी एक फ्रेंड है, मिसेस अर्जुमन, और उनकी बहन, शी वाज अ कैंसर सर्वाइवर फॉर 10 years and she was totally normal. I don't know what happened, bukhar thi or what, she went, got herself checked. The doctors told her it's stage 4 cancer, and they started with her chemo, and she died of a massive heart attack here in Riyadh. Allah unko jannat अल्लाह ताला नसीब उन्हें फरमाए. जन्नत फिरदौस में What जगह I दे। can say is, please don't neglect yourself. Self care for women is very, very important. Look after yourself. बाद में आप बच्चों को देखो, घर, शौहर, डू एवरीथिंग फॉर देम, लेकिन अपने आप को पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. स्ट्रेस, बिल्कुल have stress free life. No matter what happens, just look at me. No problem, whatever happens, I will never stop fighting. I'll never stop spreading my positivity. And money is not important for me. Maybe today here, maybe tomorrow there. It's not, that's not important. But I've learned to be self contented, stress free life, have ample of sleep, take care of yourself, your eating, your lifestyle, and stop gossiping, stop lying, stop cheating, stop troubling people, and be a good person. Allah will also be pleased with you, inshallah. आपकी अच्छी ज़िंदगी रहेगी, आखिरत की भी अच्छी रहेगी ज़िंदगी. अल्लाह के ऊपर तवक्कल, नमाज नहीं छोड़े. आपके जो ज़िक्रात हैं, जो दुआ है, सलातुल तौबा है, all these are very important things. Love your husband, love your children, love your neighbors, ताकि आप दुनिया भी छोड़ के जाएं, so they will remember कि who इंशाल्लाह। she was, अज़रा कुछ ऐसा भी सोचा है, कुछ इफ यू कैन अफोर्ड इट, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या बनाई जाए जहां पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको या तो लो लो बजट में उनको मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट दी जा सके। कुछ ऐसा भी कुछ आपने आगे फ्यूचर प्लान्स में कुछ रखा हुआ है? Yes, I have a page called You Can Beat Cancer, and I want to do something like this back home in Bangalore. क्योंकि that's where I have my people and lots of people can support. As far as Saudi Riyadh is concerned, we can sit over this, we can discuss, we can have a panel discussion, and we can form an organization where we can collect money and help people and educate women especially, and help them with this, because यहाँ पे तो काफ़ी organizations हैं. And since I got my treatment done in India,
I'm not very well. I don't have much information regarding the Saudi. So Oh, yes, we can do this definitely. inshallah. Inshallah. Jazakallah khair. My wishes are with you, inshallah ta'ala. And Jazakallah khair for sharing your very inspiring story. And I hope it would change lives. It would bring positive awareness and energy and motivation, inshallah ta'ala. और जब आप बहुत ज़्यादा और भी आगे इसके ऊपर काम कर लेंगी, आई होप टू ब्रिंग यू बैक इन माई शो इंशाल्लाह विद न्यू होप्स एंड मोर पावर। इंशाल्लाह ताला मैं आपको दुआ देती हूँ कि आप और भी इस अपना और भी प्लेटफॉर्म्स में जाएं, अपना और प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ से आप और भी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में ला सकें और पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला एनर्जी जो है अपनी ट्रांसफ़र करती रहें। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम अगेन। Thank you so much. And, oh, excuse me, one last message. The women here, my name is Azra Yousuf. You can inbox me. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई शक है आपकी तबीयत के कनेक्शन से, एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. And in case you need me to accompany you to see a gynecologist, please inbox me. I'm always there for you. अगर आपकी सर्जरी है नाउज़बिल्ला या ट्रीटमेंट है, कोई भी चीज़ हो, I will be the first person to stand by your side, inshallah. Inbox me any queries, any part of the night, any part of the day. Do not hesitate. I'm always there for you. Kindly inbox. Be brave. May, Come. inshallah, may Allah bless you for this, inshallah, and reward you immensely, inshallah. Thank you. जो लोग सईदात ग्लोबल टॉक शो के बारे में जानना चाहते हैं, आप उम्मे इब्राहिम कुरैशी को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, स्नैपचैट पे, लिंक्डइन पे एंड टिकटॉक के ऊपर हर जगह फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा फिर हम इंशाल्लाह ताला इस टॉक शो में आएंगे नए मेहमान के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.